Anwar before mock interview and Anwar after mock interview. वो काफी बेहतर चेंज आया इसमें सर। उसमें था कि अनएक्सपेक्टेड ये था कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, पता चलेगा कि कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कौन सा वीक पार्ट है, किस पे और थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाइथन से क्वेश्चन ना पूछा जाए, जो कि वही सिमिलर हुआ। इंटरव्यू का यस मतलब सर। ही होता है ये जज करना कि आप झूठे हो कि सच्चे हो। आपने जो रेज्यूम में लिखा है वो आपको आता है कि नहीं आता। उनको दो टाइप की कैंडिडेट चाहिए, वन हु इज ऑनेस्ट, ईमानदार जो है। या अनवर, वंस अगेन कुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yes, sir. First of all, thank you for giving me this wonderful opportunity to introduce myself. I am Anwar Hussain. I am basically from Begusharai, Bihar, but currently staying in Patna. I am pursuing in BTech in Computer Science and Engineering from Aryavat Knowledge University, Patna, with 8.3 CGPA. My technical skill is C and Python. I have also done internship in C and Python from ENICT Academy, IIT Kanpur. Currently, I am looking for an estimate company like yours to improve myself knowledge and further improve myself. My hobbies is listening music and traveling. That's all about me. Thank you for this opportunity. Okay, I just want to know few things about your technical skills also. Could you please elaborate a bit about your technical skills? Yes, so my technique skill is C and Python, but I am basically more comfortable in C, and this is my technique. Some basic knowledge about data structure. Okay, great, Anwar. And could you please tell me something about your project? Yes, sir. My project is a cab management application. This project aim is to provide facility those who are interested in cab booking according to their regarding all available routes and cabs name. Okay. And what about your internships and all? I've done internship in C and Python from ENICT Academy, IIT Kanpur. Okay, so what is a null pointer in C language? Null pointer is a pointer that does not refer any address. We can say the pointer which address a null value, that is called null pointer. That does not refer any address, especially a null. Okay, suppose I declare a pointer named A, right? And the Yes. type of that pointer can be any pointer. It can be a void pointer, an integer pointer, or a character pointer. It can be of any type. And suppose I write A is equals to 0. I equate that pointer with 0. So will it become Yes, a null pointer? Or will I have to write A is equals to NULL? Second one is, I think that's equals to. Once again, I'll repeat. Suppose I've declared a pointer. The name of the pointer is, let us suppose, A. Now I want to declare that as null pointer. The pointer can be of any type. It can be of integer type or a character type. It can be of void type or any type. And I want to declare that as null pointer. So will I have to write A is equals to NULL in capitals? Or will I have to write A is equals to 0? Or both will work? First one, I think A equals to null will be right. I am not sure about, but I think found in my point of view, A equals to null, I think. So you mean to say if I write A is equals to 0, it won't create a null pointer in that particular case? I can't say about this. I'm not sure about this, sir. You're not comfortable. Have you heard about dangling pointer? Yes, sir. So could you please explain what is a dangling Yes, sir. pointer? A dangling pointer is a pointer that will be a pointer when we declare any pointer, and that pointer will be deleted without knowing that pointer, without updating that pointer. That is dangling pointer. Yani its memory will be available, but that does not refer to that memory. Okay, For so example, if we memory is available, but we do not have address to that memory. We have lost the address, right? So it's like we have a home, but we do not know what is the address of our home. So it's a big problem. Now we have created a space, we have invested my money, I have invested my money to purchase a home. Now I forget the address of my home. It is a big problem. Yes, sir. How I will reach that, how I will free that memory. So basically dangling pointer is a problem in C language, right? And for the same, we have introduced Java and Python, which are pointer free languages, right? Because there were some problems with pointers, but C2 had a certain solution dealing with dangling pointers. So can you please tell how can we overcome the problem of dangling pointer in C? Yes, sir. If we come dangling pointer this problem, then we should have to use PTR null and free equals to PTR and PTR null. Using these two line, we can overcome this dangling pointer issue.
Okay, okay, great, great, great. Okay, so what is an auto keyword in C language? Auto keyword, all word are especially in C, all word are mainly called as auto word, and that auto keyword is also referred as a keyword name as key auto. Okay, so suppose if I have written int a is equals to 5, Yes, and I have written auto int a is equals to 5, are both yes, things same or they are different? both are same, sir. Both are same. So can we say by default any data type or any variable can be of auto type? Yes, sir, we can say. Okay, okay, okay. In runtime, suppose Yes, we have sir. declared a variable at runtime. So in which memory it will be stored? uh, uh, in which dynamic memory? No, no. I am talking about whether it will be stored in static memory stack or whether it will be stored in heap. uh, at memory RAM, I think stack. Okay, I so think queue, basically you sir. are saying suppose we declare any variable at runtime, it will be stored in dynamic memory, and the variable which are Yes, sir. already predefined declared will be stored in a static memory, right? Static memory. Do we Yes. agree with this point? Great. Yes, So sir. suppose a variable is stored in static memory. So what will be the lifetime of that variable? Static memory lifetime at that when declared inside a function or block, at that time their life, when the function block or a statement will uh, execute, then its life will be destroyed. But in case of dynamic memory, its lifetime is the whole the program. When the program will be executed, at that time their life will be executed. But in case of a static memory, their lifetime is only in a function or in block. When this Okay. function will be applicable, then their life will be executed. Okay, okay, okay. Suppose I have written a number as 22. For example, I've written a Yes, number as 22 is my integer variable. Now I have to yes, convert that 22 into a string, right? yes, sir. Or in that case, any constant, if I want to convert any constant into a string, suppose I have written, 47, and now I want to convert that into a string. So C Yes, sir. program gives us an, inbuilt function to do that. We can Yes, convert sir. any number to a string. So could you please tell me about that function? Yes, sir. We can use this from integer to string. That is called a typecasting. Through typecasting, we can convert any data type to another data type. Could you please explain me with example or with some code? Uh, Code, sorry, syntax is a typecasting is expression and expression No, name no, and type. you're For not example, getting my point. I have a integer a is equals to 22. Now I want to yes, sir. convert that to a string. Now that 22 should be a string. In that case, I can give any value to a, but that Yes, should sir. reflect as a string. And I have to do this with a single function, with a ready-made, with the inbuilt function in C language. Suppose we are creating a program where the user is inputting date, user is taking date as an input, and I want the output to be date, month and year in a single line. So first of all, we have to convert that integer data into a string. No, after that we can Yes, sir. concatenate these strings and insert hyphen in between. Yes, sir. Yes. So how we will Uh, convert that into a string, that integer into a string? I'm not sure about, By sir. typecasting we can do that, but how can we do that by typecasting? I'm not deep knowledge, but yes, sir. Knowledge Okay. is not deeply knowledge. Is it possible to increment or decrement a pointer variable? Yes, sir. So can we always increment or decrement a pointer variable, or are there some exceptions to it? Sir, some exception in between pointer increment. What are the exceptions? In case of string, we can directly not, in case of a string, we can increase the address of the pointer, not directly value. I'm not getting. Suppose I've declared a pointer a, right? Yes, And sir. and if I write a plus plus, so will that Yes, work sir. or not? Yes, definitely work. Sorry, it will be denoted to another. It's never address block. For example, if we declare a equals to location 1000,
If it is a pointer data type, integer data type, then it will be referred to 1002. I once again repeat my question. You are saying that we can increment or decrement a pointer variable, and you agree with me, right? So are Yes. there any circumstances where we cannot increment or decrement a pointer variable? In case of decrement, when we reaches to first position, after that we cannot decrement. In case of decrement, when we reach final position, last position. Okay, so I'm not suppose sure. I have written A as my array name. Yes. A is the name of Yes. my array. Now this is a pointer Yes. because the name of the array is nothing but the base address of the array. Now suppose Yes. if I do A++, will that work or not? Yes, sir. In case of array, sir. What in case of array? Yes, it will work, sir. It will work. Okay, great. We'll ask some question on Python as well. Could you please tell me what are list and tuples in Python and what is the key difference Yes. between these two? Yes, sir. List and tuple. List are, sir, immutable. Tuple are immutable. That means in case of mutable, we can edit the data type. But in case of immutable, we cannot edit data type. List are declared in parenthesis, and tuple are declared in square bracket. Okay, great. So can you please tell that is Python a strongly typed or a weakly typed language? Strongly typed, sir. Strongly typed. So what is the basic difference between a strongly typed and weakly typed? Could you please tell me with some example? A strongly typed data type means there is already some built-in function or is already available. But in case of weakly type, we should have to create some basic inbuilt-in function. For example, we can say C is a weakly type language. Okay, and you might have done some coding as well in your career, in your engineering life, right? Yes. So you might have used many, sorting algorithms. So which sorting algorithm is your favorite one? I've not done in coding DSA, but I can say merge sort. But in suppose if you want to create any program, sorting is a very basic part. No, we should know about it. Okay, Yes, sir. Yes, sir, so definitely. okay. Suppose if we want to make a trade-off between time complexity and space complexity, right? Suppose you are developing an app. Either you can Yes, sir. make it a faster app, but it will consume more memory, right? Yes, sir. Or either you can make a app which consumes less memory, but it will take more time to execute. So Yes, sir. what will you prefer? Will you prefer increasing the time but consuming less space, or decreasing the time but consuming more space, and why? Sir, in present scenario, people wants only anything in less time. So that's why my motto is to prefer that type of template algorithm in which there is less time complexity and more space. I don't care about space complexity. I only know about time complexity in which Why less don't time you think complexity. about space? But also space is a matter, but in user point of view, We can time say complexity. that in today's time, space is a very cheap thing, right? We can easily get 128 GB phone or 256 GB phone. Space is not a big thing to deal, but time is a crucial thing when it comes to Yes. a particular individual, right? Yes. Okay, great. You might have learned about linked list little bit. Do you have idea about it? Yes, sir. So can you please tell me the scenarios where linked list should be preferred over array, and the scenarios where array should be preferred over linked list? The scenario when linked list preferred over array. In case of linked list, we can declare it is uncontinuous memory allocation. That means we can usually any where data. But in case of array, we cannot use directly. If we declare array once in a slash, then we cannot edit the data array. Similarly, in case of array preferred over linked list. In array, we can create similar type of data type, but in case of linked list, we can create different type of data type. So if we want to use only one type of data type like integer, integer, character, float, then we should prefer array, not linked list.
Okay, good one. Anwar, could you please tell me little detail about your project once again? I want to listen it. Yes, sir. My project is cab management application, and this project aims to provide facility those who are interested in booking cabs according to available all the available routes and cabs name. This project is done in Python and SQLite database. I have done this project on Python. My role is to Python coding, test case and test case execution. In real life, we can prefer can say this app is similar to Ola and Uber. That's Okay, all. so how many people have made this together? This is a group project. 4 people have made. 4 people have made together, and your role was a Python programmer, Python coder, and the tester. About Yes, right. sir. So, have you worked on Yes. SQL also in your project, or some other team member have done that? Some other team member had done, but I have knowledge about some basic knowledge about Basic knowledge. So, can you please tell me the difference between delete and drop command? delete and drop command. Yeah. I'm not certain. Yes. Okay. One thing I want to ask, right? Ola and Uber are one of the most successful startups we see today. They are one of the most successful brand. So, could Yes, you sir. do you think that will you be able to beat them with your project? Yes, sir, definitely. In my project, mine is to provide facility. Those in case of in present scenario, driver has cancelled any order. In case of my app, the project I built. In case of if driver has cancelled the order without giving any correct reason, then they should have to pay some penalty. And also this type of if they have preferred exact timing, then they should have to reach on the time. This type of scenario I will be trying to make in this project. Okay, so how are you going to implement all these facilities? This as a present I've only done on backend program, and I will try to make on front end so that I will be used in real life also. Okay, great. One more thing I just want to ask you, right? Just a suggestion from my end, right? There are many small cities in our country where Ola and Uber are not, reachable right now. So instead Mm. of, competing with them, right? This can Yes, be sir. your second stage of your development that you can compete with them. So your automation model or your testing model should be right, the places where Ola cannot reach, the Uber cannot reach, you should reach Yes, that places and start your work. There are two benefits. First of all, you'll be starting earning something. Second, you yes, can test your app in small cities in a better way rather than directly jumping to big cities. You're getting my yes, sir. point, Yes, sir. right? Yes, sir. So just a suggestion from my side, that there are many villages in our country, there are many small cities where Ola and Uber are not functional. I know the bandwidth or the area of those cities are less, but we can have some system, automated system like Ola and Uber, where people can book cabs, and they can travel, right? And Yes, sir. then after that, Yes, sir. once your model is successful, then you'll be in need of some fund. Then you will approach to fundraising companies, right? They'll ask you how your model is better than Ola and Uber. Then you can tell Yes, them sir. at least some basic automation that we have run this in so and so small cities, and the model is working very fine. Great, great, Yes. great. Anwar, could you please tell me something about your family background? Yes, sir. About my family, there is a total 8 member. My Okay. total 8 member, and my father is a teacher, but recently he lost his job, and that's all. Okay, and how many brothers and sisters you are? Uh, 5 brother and 3 sister. 5 brothers and 3 sisters, and you are the eldest one or the youngest one, or somewhere in between? Uh, no, my position is fifth. Fifth. Okay, so do your any of your brother or your father have any sort of business? Yes, sir. Recently, when I joined BTech in 2018, August month, and then at that time my father has lost that job. Then me and my father and other family member decided to make some business. At that time, we have built for some fortune shop, and that is my business. And And through suppose that, and suppose at some point of time working in our company, you feel frustrated.
and by God's grace your business also runs good, so you won't hesitate to leave our company, right, and join your No, business. sir. No. That at that time, as a fresher, I'm trying to make gain as much as possible knowledge, and that is of my aim. I am not decided about any business at that time. My only aim is to gain as much as possible knowledge. Okay. In which semester have you scored maximum marks? Fourth semester. Fourth semester. So could you please tell me the names of the subjects which were in your fourth semester? Yes, sir. In the fourth semester, subject is operating system, computer architecture, and PhD, professional skill development, and another one is computer network, and some one knowledge, three subject, and fourth one is software engineering. So you have four subjects. Basically, we have five subjects, no, in our semester exams. One subject I am missing. Okay, no issues. One more thing I want to ask you, right? Your BTech percentage is quite decent, right? But your 10th and 12th percentage seems to be a little demotivating. So why so less percentage in 10th and 12th? And why haven't I you have given improvement exam in your 12th? Sir, in 10th and 12th, I have done in Bihar board, and Bihar board marking scheme, all of them are known. In comparison of CSC board, there is two less marking scheme here in Bihar board, and in Bihar board, if you score 60, 65, then it seems to be a good student. That's why in 2015 I have done 10th, and 2017 I have done 12th. According to my, I have scored less marks, but yeah, at that time I'm trying to make more as much as possible from my side. Yeah, we too know the scenario of Bihar and UP board marking is difficult in those, states. One more thing I want Yes, to sir. ask. I think after your 12th, you have taken a gap of 1 year, if I'm not wrong. Yeah, yes, sir. So could you please justify the reason for that gap? Yes, sir. In after 10th, I have decided to join as IT my profession, and that's why I'm trying to may prepare for JEE Mains examination. So after 2 years, I not feel comfort. I am in confident that I can score my. That's why I have take 1 year back and join again for JEE Main preparation. That's why at that time I have not scored too much score, and then we get a exam through BCC and took admission in BTech. That's why 1 year. Okay. Anwar, could you please tell me your long-term goal? Yes, frankly, to be very honest, I wanted to be a politician because I felt that a politician to be a good team player and as well as good have a good experience. I can serve country in a much better. Okay. And what are your weaknesses? Frankly, to be honest, my weakness is when there is too work high pressure, then I start compromising my health. Because at that time, my first priority is to complete work at that time with efficiently. Now I have to make a chart plan to follow a proper timetable so that I can give ample amount of time to my health. Okay. And one more thing, I just want to put you in a situation. Okay. Are Yes, you sir. interested in IPL matches? Have you watched them? Yes, yeah. Well, cricket is my hobby. Okay. You have a certain interest in cricket. Which is your favorite IPL team? Mumbai Indians. Why so? Because of Rohit Sharma is my favorite player, so that's why I have Okay, Rohit Sharma is your favorite player. Okay. I am putting you in a situation, right? You are in the auction board of IPL, right? And Rohit yes, sir. Sharma is sitting next to you, and you are superior to him because you are in the selection board, right? And you have to make Yes, sir. a team. You are sitting in the auction. Now, suppose only two players are left. One player is Yes, sir. a very experienced player, like you can imagine Virat Kohli or maybe MS Dhoni or maybe Kane Williamson, right? A very experienced player, but he is currently not in form, right? He is a Yes, very sir. senior player, very experienced player, but he is not in form currently. And the second one is a very young player who has not played international cricket so much, or like you can imagine Rituraj Gaikwad, Devdutt Padikkal, Yes, sir. or a very young player, right? But the guy does not have much of experience, but he is currently very much in form. Now you Yes, sir. have only one place left in your team,
right? So you have Yes, sir. to make a choice between these two. So would you go with that experienced but not informed candidate, or would you choose the less experienced but great informed candidate? According to my point of view, first of all, we should prefer in scenario prefer experiences also matter, but at that time who is performing better than someone else. That's why I'm preferring the player who will be not experienced but informed. I will prefer that player because of experience matter also, but uh, um, in case of form, that will perform much better at that time scenario because of experience matter. But according my point of view, I will prefer those players who will inform. Okay. And when it comes to politics, suppose you have to give, a ticket to your one of your candidates. Would you prefer experienced candidate or a youth in that particular case? It is too difficult, but we should have to prefer all the scenario at that scenario. If we can say this is a parliament election, then we should have to prefer all the location of that say location, because if in case of politics, experience always matter, and people are also trying to make those as a candidate who are experienced. So I will prefer experience, not a candidate, not So basically, you are trying to say that it all depends on scenario, basically, right? In yes, sir. cricket, you can go with the someone who is in form. Whether he is a Yes, sir. Yes, fresher or experienced doesn't matter, but in politics, experience matters. Suppose yes, sir. after 10 years, you are a project lead in an IT company, right? Yes, sir. And now suppose you have to accommodate one of the team member in your team, right? And now Yes, sir. again you have two choice. The one who has Yes, sir. currently joined your company, he has brilliant knowledge about coding and all, and the second one is the experienced candidate who can be, right, you are a project lead, so obviously you'll be needing someone who has a lot of experience dealing with clients and all, right? But the experienced Yes, candidate is not a very good coder, right? But yes, he has experience of working in your company since last many years, and the fresher is of, less experience, but he is very good in coding. Now whom will you prefer and why? in case of IT company, day to day, different types of language will be coming. So, in case of project, any project, we should have to choose those candidates who have recently a good programming skill as well as a good knowledge about the recent coding language will be going. That's why I will prefer fresher student who have more technical knowledge. Okay, so here you'll be going with fresher. Okay, one more, Yes, just sir. last situation, right? Yes, sir. Suppose you are of age 35 to 40, right? And you have approximately 15 to 20 years of experience working in an IT company. Now the CEO Sir. of your company Yes, sir. decides to, go with a candidate who is fresher and who has more knowledge than you. Yes, sir. How will you convince now him? Because you as a Uh, CEO decided to choose a fresher. Now the yes, sir. situation comes to you. Your CEO decides to choose a fresher, not you, and you are experienced currently. How will you deal with this situation? Uh, First of all, we should have to convince according the previous I have done all the my all the skill I have done in the company as a experienced person, and I have also convinced that I am a most accurate person in the company as a CEO. No, I am there is a performing. situation, there is a condition which I've already told. The fresher is more knowledgeable than you. He has a better coding skill. So you cannot tell your CEO that I am better in terms of coding. So how will you convince him? Uh, First of all, I will give all the scenario in case of the no, skill in present in fresher. I will be try to same knowledge will be so in case of company head, and they will be convinced them. I have also knowledge that will be available in fresher. I have also knowledge. If I have not knowledge, then I will try to gain that all of the knowledge that will be available But in the fresher. right now I need a candidate, and you will take at least 1 month to gain that knowledge. I already have a candidate who has that knowledge. Uh, According to my point of view, I will be give the seat fresher, and I will make a new company. You'll just give up there, right?
Not to give up. I will be give some fresher student, those who want to give want to give some experience. That's why I believe. Okay. Why do you want to join our company? As a fresher, I have very less practical knowledge, but I have ability to gain knowledge as much as possible. And I believe in key of success as the growth of the company as well. And I believe that I will be give 100% from my side, and I will be do my best. Okay, okay. And are you willing to relocate to any location wherever we will be sending you? Yeah. It will be cherry on cake because traveling is my hobby. New location, new friend, new environment, and change is necessary. And I believe in change. That's why I'm willing to relocate. Okay. And anything you want to ask to us? Yes. What is the work culture of your company, as well as in which latest technology company will be working, so that I can learn and give to your company Okay, okay. And from my side. once you are selected, we'll be adding you to a workplace group where all the Yes, sir. candidates of the company will be present. So you can directly communicate to them. It's open conversation, right? It's like a Facebook, app. Workplace is also supported by Facebook only. You can chat with them better. They will be able to explain you better about the work culture of the company. And coming to the projects of the technology, we have a number of domains, right? So it's all Yes, sir. decided in the runtime. We cannot comment anything as of now. And Okay, sir. it was very nice talking to you. Wish you all the best. Please wait for a result. It will be communicated very soon through email. Thank you so much. Okay, thank you, sir. Thank you. अच्छा, पहले Yes, मैं sir. आपसे एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ, लाइक मॉक इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा डिटेल में बताओ, लाइक कि जैसे बहुत बढ़िया क्या रहा चल रहा क्वेश्चन था पूछने का जो अंदर, क्या एक्सपेक्ट किया था इस इंटरव्यू में आने से पहले, अभी क्या सोच रहे हो, पहले क्या थे, अभी क्या हो, सब थोड़ा सा डिटेल में बताओ। सर पहले से पढ़े हुए सी में थोड़ा कॉन्फिडेंट है, बस ये एक्सपेक्ट कर रहे थे सी पाइथन से क्वेश्चन ना पूछ आ जाए, जो कि वही सिमिलर हुआ बस, और बाकी सब मेरे तरफ से बहुत बेहतर रहा। थोड़ा सा पॉइंटर बोला क्वेश्चन थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा टॉपिक। अच्छा, वर्थ इट था, मतलब मॉक इंटरव्यू देना, लाइक कुछ यस सर, फायदा मिला डेफिनेटली वर्क था। एक्चुअल इंटरव्यू में? यस सर। क्या क्या? बोलो बोलो। यस सर, डेफिनेटली सर। अभी हेजिटेट जरा से भी सर ये नहीं, फ्रस्ट्रेट और हेजिटेशन नहीं है, जिसमें शुरू हुआ तो उसमें काफी ज्यादा यस सर, अंदर से काफी ज्यादा ये हो रहा था, अभी काफी बेहतर अच्छा फील कर रहे हैं सर। अच्छा फील कर रहे हैं, तो एक काइंड ऑफ ना डर थोड़ा एलिमिनेट हुआ होगा, मे बी यस आप अब थोड़े यस से ज्यादा प्रिपेयर्ड रहोगे कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, राइट? है ना? डेफिनेटली। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक दो चीजें और मुझे पूछना थी, लाइक अनवर बिफोर मॉक इंटरव्यू एंड अनवर आफ्टर मॉक इंटरव्यू। यस काफी बेहतर चेंज आया इसमें सर। उसमें था कि अनएक्सपेक्टेड ये था कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, और अब पता चलेगा कि कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कौन सा वीक पार्ट है, किस पे और थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा, ठीक है, मैं आपको फीडबैक बताऊंगा, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपने भी 30 मिनट इंटरव्यू दिया, मैंने भी सुना, यस सर। तो पहले आप खुद अपने आप को फीडबैक दो, लाइक आपको क्या लगा कि यार मैंने ये एक्सपेक्ट किया था बट मैं इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, मेरे अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, तो आप पहले अपने तो आप को सर फीडबैक दो। थोड़ा सा वो टेक्निकल स्किल पे थोड़ा और वर्क करने की जरूरत है, स्पेशली इन पाइथन एंड सम इन सी आल्सो। एचआर क्वेश्चन थोड़ा सा और बेहतर एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है, और जी सर। ठीक है, गुड। अच्छा, पहली चीज जो मैं आपसे बोलता हूँ कि थोड़ा सा जब अपन बोल रहे हैं, राइट, यस सर। तो उसमें थोड़ा सा स्लो इन पेस रखना, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, यस सर। बहुत आराम से स्लो इन पेस। आपके अंदर ना वो थोड़ी सी हड़बड़ी दिख रही थी, है ना, तो थोड़ा सा यस स्लो डाउन सर। करना है, थोड़ा सा कूल डाउन करना है। अगर इंटरव्यूअर जल्दी में होगा तो वो उसकी यस सर। गलती है, हम आराम से इंटरव्यू देंगे, बिकॉज हमारा इंटरव्यू है, हमें सिलेक्शन चाहिए। तो आराम से ओके कोई सर। भी पॉइंट आप एक्सप्लेन कर रहे हो, टेक्निकल आंसर्स दे रहे हो, धीरे धीरे आराम आराम से पॉइंट बाय पॉइंट उसको एक्सप्लेन करो। कई लोग ये सोचते हैं कि धीरे धीरे आंसर देंगे ना तो इससे ये झलकता है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं है। नहीं भाई, आप यस तेज सर। तेज देख के अटक रहे हो ना, ये लैक ऑफ उससे कॉन्फिडेंस। आप धीरे धीरे यस एकदम सर। फ्लो में एक एक पॉइंट समझाते जा रहे हो, इट मींस आपके अंदर क्लैरिटी है माइंड में, और आपके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप एक्यूमुलेट करके धीरे धीरे आंसर दे रहे हो। तेजी से यस बोलते सर। हो, इट्स लाइक अ रटा हुआ आंसर, है ना। जैसे आपने यस जैसे यस आपसे सर। कोई भी एचआर क्वेश्चन पूछा, आपका आंसर था फ्रैंकली टू बी वेरी ऑनेस्ट,
राइट? मतलब ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके आए, ऑब्वियसली अच्छी बात है ना, प्रिपेयर करके आना भी चाहिए, बट हमको इंटरव्यू में ये रिफ्लेक्ट नहीं होने देना है कि यार वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट, है ना? इट शुड बी लाइक समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड, है ना? थोड़ा सा रेज्यूम पर बात कर लेते हैं, मैंने कुछ कुछ फीडबैक्स लिख रखे हैं भाई। सबसे पहले तो आपने इसमें जो लिंक्डइन की लिंक डाली हुई है ना, वो क्लिकेबल बस वो छोटा था। यस सर। है ना, क्लिकेबल नहीं है, उस पर क्लिक कर रहा हूं मैं तो किसी अननोन पेज पर भेज रहा है, वो बोल रहा है पेज नॉट एग्जिस्ट करके, एक बार उसको चेक करना, ठीक है? ओके सर। पहला पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट। दूसरा पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर आप देखोगे ऊपर अपनी पर्सनल डिटेल्स में ना, जेंडर वाला जो पार्ट है ना वो अलाइंड नहीं है, मतलब एक दो स्पेस ज्यादा दे दी। यार रेज्यूम आपका है, रेज्यूम आपकी लाइफ का हमेशा, जब तक आप जॉब में हो, नोट मत करो, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है? अभी सुनो, ओके सर। है ना? तो जो जेंडर है ना, मतलब जेंडर बोल रहा हूँ मैं, रेज्यूम में आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी नहीं, इवन आप 2-3 साल बाद जब कंपनी भी स्विच करोगे तो रेज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने रेज्यूम में अलाइनमेंट के ध्यान नहीं रखा है, इसका मतलब आप उस चीज को लेके सीरियस, जबकि आप हो सीरियस, लेकिन ये एक यू नो स्टीरियोटाइप बना दिया कि लाइक यार अगर रेज्यूमे में ही आप इस चीज का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो आगे जाकर के मैं ईमेल ड्राफ्ट कराऊंगा आपसे अपनी कंपनी में, तो आप उसको कैसे सिंसियरली लोगे? जबकि क्लाइंट को ईमेल जा रहा है तो इट शुड बी एकदम बिल्कुल इन द फ्लो, है ना? अलाइनमेंट वाइज थोड़ा सा जेंडर का अलाइनमेंट देखना है, ठीक है? उसके बाद बाकी सब बहुत अच्छा है भाई। उसके अलावा आगे एक चीज देखो भाई, जो चीज मतलब ऐसा लग रहा था टू बी ऑनेस्ट के रेज्यूम देख करके फाड़ के फेंक दूं, आपने डेटा स्ट्रक्चर की स्पेलिंग पता क्या लिखी है? STURTURE, गलत स्पेलिंग है वो, स्ट्रक्चर STRUCTURE होती है। अब आप ये सोचो, रेज्यूमे आपका है, इतना इंपॉर्टेंट रोल, आपकी जॉब का सिलेक्शन रिजेक्शन रेज्यूमे पर डिपेंडेंट होता है, हाउ कैन यू मेक अ स्पेलिंग मिस्टेक इन दैट? तो जब भी कभी आप रेज्यूमे बनाओ ना, देखो क्या होता है ना, मैं एक चीज बताता हूँ, हम क्या करते हैं, हमने नेट से या कैनवा एनवा से रेडीमेड टेम्पलेट डाउनलोड कर लिए, वहां पर चीजें भर दी, अच्छी बात है, लेकिन इनमें सब ना ग्रामर चेकर स्पेल चेकर नहीं होता है, तो एक बार इसको ग्रामर चेकर स्पेल चेकर पे डालो, देखो एक बार, है ना? अच्छी बात है कि ये सब चीज अपन को अभी पता चल गई, ठीक है? उसके अलावा आपने ना यहाँ पर इंटर्नशिप में लिखा है पाइथन इंटर्नशिप फ्रॉम मेगा सॉफ्ट एजुकेशन, ये मेगा सॉफ्ट एजुकेशन कहाँ की है, उसके बारे में थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट लोकेशन, कि भाई आपने पटना से ही किया है या आपने कहीं और से की है ना? उसके अलावा पटना से किया। हाँ, अब ये पटना तो आप से ही बता किया। रहे हो बट उसमें मुझे नहीं दिख रहा है रेज्यूमे में, है ना? और ओके सर, 3 मंथ के आगे ब्रैकेट में एस क्यों लिखा है? मंथ्स पूरा वो भी होना हटा चाहिए, दें। है ना? उसको यस थोड़ा सा यस। अपन देखेंगे। उसके अलावा प्रोजेक्ट को एक बार आप पढ़ना, मुझे लग रहा है उसमें कुछ कमी है, दिस प्रोजेक्ट एम्स टू होता है, एम इज टू नहीं होता है ना? दिस प्रोजेक्ट एम्स टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू दोज हु आर इंटरेस्टेड इन बुकिंग कैब्स अकॉर्डिंग टू देयर, क्या लिखा है? रिगार्डिंग ऑल अवेलेबल रूट्स एंड कैब नेम अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू देयर डेस्टिनेशन, इस तरीके से कुछ तो मिसिंग है उसमें। अच्छा एक चीज और, जब भी कभी रेज्यूम है ना, आपके परिवार में या खानदान में कोई तो एक आध बंदा होगा जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी, है ना? यस सर, होगा। तो यस सर, है। एक बार उनको दिखा दो, शर्माना क्या उसमें, दिखा दो, वो बता देंगे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, बिकॉज आप यकीन नहीं मानोगे, रेज्यूमे पहले से मंगा लिया जाता है हर कंपनी में, और उसको बैठ करके 10-10 मिनट इंटरव्यूअर आपके आने के पहले ना 10 मिनट आपका रेज्यूम देखता है, और आपके रेज्यूम के बेसिस पे वो जज कर लेगा अनवर किस टाइप की पर्सनालिटी है। और फर्स्ट इंप्रेशन आप जब जाते हो वो फर्स्ट इंप्रेशन नहीं होता, वो तो सेकंड इंप्रेशन हो गया, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर रेज्यूमे, क्योंकि रेज्यूमे आपसे भी पहले पहुंचता है ना? यस सर। तो इन सब बारे में देखना है, बाकी बहुत अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक आपने मेरा MPH प्राइम मेंबर हो ना आप, तो यस सर। आप यस रेज्यूम प्रिपरेशन कोर्स देखा अभी तक? यस सर। यस सर, देख लिया, उसी का तो सर था वो, फ्रैंकली टू हाँ बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, तो बाकी बिल्कुल मैं समझ ही गया था कि आपने देख के बनाया है, तो उसमें रेज्यूम में कंटेंट वाइज कोई कमी नहीं है, स्ट्रक्चर वाइज कोई कमी नहीं है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, बस थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स, अलाइनमेंट, इन सब चीजों का अपन ध्यान रखेंगे, है ना? उसके अलावा नीचे मैंने आपने रेज्यूम कोर्स देखा होगा, तो मैंने बोला था उसमें नीचे डिक्लेरेशन इन सिग्नेचर होना चाहिए,
यस सर, डिक्लेरेशन, यस वो नहीं है ना। और ऊपर आपकी फोटो के जस्ट नीचे गेट इन टच लिखा है, मतलब ये क्या चीज है? वो भी हटा देंगे सर। वो कांटेक्ट वो मतलब डिटेल्स आप लिखना चाह रहे थे, उसको थोड़ा सा आपने क्रिएटिव तरीके से में भी लिखा होगा, इफ यू वांट टू गेट इन टच, आप मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब तो थोड़ा सा फॉर्मल उसको बनाना है, तो ये नहीं लिखेंगे, हटा देना। प्लस रेज्यूमे ओके शुड सर, ऑलवेज हैव योर कॉलेज आइकन, आपने किस कॉलेज से किया है उसका आइकन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सर उसको भी डाल दें, ओके सर। हाँ, और बाकी मैंने रेज्यूम कोर्स में भी रिकमेंड किया था कि ये रेडीमेड टेम्पलेट्स का यूज मत करो। इंटरव्यूअर समझ जाता है कि रेडीमेड टेम्पलेट है। मैं कम से कम 150 मॉक इंटरव्यू ले चुका हूँ अभी तक, 150 प्लस, और ये टेम्पलेट यस कम सर, से कम मेरे को 25-30 लोगों का दिख गया सेम टेम्पलेट, तो समझ में आ यस जाता है भाई, मैं तो बहुत कम ले रहा हूँ, वो तो हजारों इंटरव्यूज ले चुके होते हैं। अब टेम्पलेट में प्रॉब्लम कुछ नहीं, टेम्पलेट में फिर वही बात है, रेज्यूम आपका है अनवर, यस है ना। अब आप खुद उसको डिजाइन करने का कष्ट नहीं ले सकते हो, तो मेरी कंपनी में भी आप एक आलसी प्रवृत्ति के इंसान रहोगे। रेज्यूम तो आपका खुद का है, यस कंपनी में तो आप सिर्फ नौकरी कर रहे हो, तो उसको क्या आप अपना समझोगे जब आपने खुद के रेज्यूमे को अपना नहीं समझा, है ना। तो इन सब टेम्पलेट बातों को टेम्पलेट ध्यान चेंज रखना। कर देंगे, हाँ, टेम्पलेट सही चेंज कर देंगे टेम्पलेट चेंज मत करो ना, एमएस वर्ड में स्क्रैच से बनाओ ना, क्या दिक्कत है? आपने मेरा सर। रेज्यूम देखा था, मैंने रेज्यूम भी यस डाला सर, हुआ यस, है उसमें, एक बार चेक करना। मैं ओके खुद सर, देखा डिजाइन था। किया है मैंने, कोई टेम्पलेट कहीं से कॉपी नहीं किया, है ना। चलो, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अभी थोड़ा सा इंटरव्यू की बात कर ली जाए। बहुत अच्छा दिया, टेक्निकली भी आप अच्छे हो, कोई उसमें कमी नहीं है। थोड़े से कुछ कुछ जो यस ट्रैप क्वेश्चंस होते हैं उन पर अपन ज्यादा अच्छे से नॉलेज, देखो एक बहुत अच्छी बात क्या है आपके, उसमें आपने कम लिख रखा है। अगर डेटा यस स्ट्रक्चर सर, में भी कॉन्फिडेंस नहीं है, हटा दो। सी प्लस प्लस यस में भी सर, कॉन्फिडेंस नहीं, हटा दो, सिर्फ सी और पाइथन लिखो। सी, आप कितने ज्यादा सब्जेक्ट लिख रहे हो उससे सिलेक्शन नहीं होता यार। अगर सिर्फ यस सर, रेज्यूमे से सिलेक्शन हो रहा होता ना, तो मैं बोलता कि भाई रेज्यूमे दे दो, हम सिलेक्ट और रिजेक्ट करके भेज देंगे। इंटरव्यू इतना क्यों ले रहे हैं, इतना खर्चा, इतना समय क्यों दे रही है? इंटरव्यू का यस मतलब सर, ही होता है ये जज करना कि आप झूठे हो कि सच्चे हो। आपने जो रेज्यूमे में लिखा है वो आपको आता है कि नहीं आता। तो 10 यस सर। सब्जेक्ट मत लिखो, आप एक लिख दो, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस 100% होना चाहिए। जैसे आपने सर मेरा, स्टार्टिंग में बोला ना कि पाइथन को लेके मुझे डर लग रहा है, अब बाई चांस में पाइथन ही पाइथन पूछ लेता तो, यस सर, है ना। तो पाइथन मैं थोड़ा सा सिर्फ वीक है ये सर इन लिखो, कोई कंपेरिजन। दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो चीज आती है ना, अगर इंटरव्यूअर पूछे भी इतना कम क्यों लिखा है, बोले सर मुझे और भी चीजें आती हैं, मुझे पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर, सी प्लस प्लस भी आती है, लेकिन मैं 100% कंफर्टेबल नहीं था कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, इसलिए हटा दिया। तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो, लेकिन बस अगेन यस आई सर, कैन नॉट प्रॉमिस कि मैं हर क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगा, है ना। ओके लेकिन सर, हाँ, मैंने अगर सी मेंशन किए तो आप कुछ भी पूछ लो, मैं बता दूंगा, है ना। ओके सर। बाकी देखो, सर सी उसमें में सी, पॉइंटर्स में नल, डैंगलिंग पॉइंटर, ये सब तो आनी चाहिए, आते भी आप, अच्छी बात है। हाँ, यस, बोलो बोलो। हाँ सर, ये उसमें सिर्फ सी रहने देंगे कि पाइथन को हटा देंगे, रहने देंगे? नहीं, आपका कॉल है। देखो, अगर आपका इंटरव्यू में भी समय है आपके पास, और आपको लग रहा है कि मैं जब तक पाइथन कर लूंगा, कर लो, कोई ये दिक्कत नहीं। इन्फोसिस का अभी नहीं आया इंटरव्यू में, ये सिस्टम इंजीनियर का। अब देखो, ये आपका कॉल है, अगर आपको लग रहा है कि यार सी लैंग्वेज में मेरे को और इम्प्रूवमेंट करना है, तो फिर पाइथन मत लिखो, सी पर ही फोकस करो। अगर लग रहा है कि यार हाँ, 70-80% सी तो रेडी है, मैं आंसर कर दूंगा, मेरे पास समय है, मैं पाइथन पढ़ सकता हूँ, तो पाइथन लिख दो, ओके है ना। सर। ठीक है, और कुछ? और देखो, जो भी है, एक चीज मैं बता रहा हूँ, अगर पाइथन अगर लिख रहे हो तो उनको बोल देना कि सर पाइथन मुझे आती है, बट मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, आई एम इन द लर्निंग स्टेज। देखो, उनको ना, आपको वो सब सिखा देंगे। उनको यस सर, पहले से पढ़ा लिखा कैंडिडेट नहीं चाहिए, टू बी ऑनेस्ट, वो आपको सब सिखा देंगे। यस, आपको अगर बेसिक नॉलेज भी है ना, चलता है। उनको दो टाइप के कैंडिडेट चाहिए, वन हु इज ऑनेस्ट, ईमानदार जो है, यस, आपके अंदर वो मुझे दिखा, ईमानदारी आपके अंदर है, जो भी था आपने पहले ही बोल दिया कि सर ये है, ये नहीं है, इस क्वेश्चन का यस आंसर सर, आता है, नहीं है, इसका नहीं आता, आप और कुछ पूछ लो, चलेगा, कोई नेगेटिविटी नहीं है उसमें। ठीक है, तो उनको यस क्या सर, चाहिए, दो टाइप के कैंडिडेट चाहिए, एक जो ऑनेस्ट हो, मानता, दूसरा यस सर, जिसकी लर्निंग एबिलिटी हो। सर मैं पाइथन सीख रहा हूँ, धीरे धीरे करके और अच्छे से उसको बनाऊंगा, है ना। बाकी आप बहुत अच्छा कर ओके रहे हो सर। जाएगा आपका सिलेक्शन, टेंशन वाली बात ही नहीं, है ना। सर ड्रेसिंग सेंस सही था, कम्युनिकेशन स्किल। हाँ, खूब अच्छा है, कोई उसमें कमी नहीं है।
बस अंदर इनर Yes, विनर मत पहन के जाना उस दिन, अभी तो सर्दियां हैं, ठीक है, समझ आता है। अगर जाओ तो yes. ऊपर का बटन लगा लेना, ठीक है। और जाना एक है सर, चीज, ऑफ वर्चुअल ही होगा सर। हाँ तो वर्चुअली होगा तो ऊपर का बटन लगा लेना। एक चीज और प्लीज, टाई जुगाड़ लेना यार कहीं से। पता क्यों? ओके सर। देखो, यस 100 सर। में से ना 2 बंदे ही टाई पहन के जाते हैं जनरली इंटरव्यू में, लेकिन उन 100 में से 2 का सिलेक्शन भी होता है। मतलब मैं ये नहीं बोला टाई पहनने से सिलेक्शन हो जाएगा, बट एक प्लस पॉइंट आ जाएगा। मैं अपना एक्सेंचर का एग्जांपल देता हूँ, 400 बच्चों ने इंटरव्यू दिया था, 400 में मैं अकेला था जिसने टाई जो पहनी हुई थी। बताए तो थे। है ना, ठीक है, यस सर, बाकी पूरा बढ़िया चल रहा वीडियो में सर है। हमें एक बार इंटरव्यू सर ये प्रिपरेशन वाला कोर्स देख लेना, रेज्यूम वाला कोर्स एक बार दोबारा से देख लेना, और रेज्यूम में जो जो चेंजेस हैं वो। लेकिन इंटरव्यू प्रिपरेशन में जो एचआर इंटरव्यू के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ना, उनके आंसर यस जरूर सर, देख लेना। वो सर नोट डाउन सब किए हुए हैं सर, सारा हम्म, वीडियो सारा देख चुके तो मैं समझ गया था, हैं। आपने जैसे वो पॉलिटिशियन वाला आंसर दिया था, मैं समझ गया था। यस, हाँ हाँ हाँ। यूनिक लगा, जितना ढूंढे गूगल सब में से यूनिक वही लगा सर, हाँ इसी तो वजह उसको से। बनाए ही इतने प्यार से है भाई कि ऐसा इंटरव्यू कोर्स कोई बना ही नहीं पाएगा, है ना। यस सर, चलो, डेफिनेटली और सर। कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, और वही उसी का तैयारी कर रहे हैं, जब आएगा मेल तो उसी के लिए वेट कर रहे हैं। नहीं, बहुत और अच्छा है, पाइथन जो मतलब बचा हुआ मैं, सो और इम्प्रूव कर लेते हैं। हाँ थोड़ा सा ना इन्फोसिस के बारे में भी जानकारी लेकर चले जाना, है ना। कंपनी का सीईओ कौन है, इन्फोसिस की टैगलाइन क्या है, एक बार उनकी वेबसाइट ऊपर ऊपर से विजिट कर जाना। कई बार वो पूछ ओके लेते हैं सर। आपने हमारी वेबसाइट स्क्रॉल की है क्या, आप मना कर दोगे तो थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन आ जाता है कि यार किया ही नहीं, है ना। तो समय है अभी, पूरा फोकस, बिल्कुल जान झोंक दो। दिन में 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हो क्या? कर सकते हो डेफिनेटली सर, ना? उसी। कर लो, एकदम जान झोंक दो, ठीक है। चलो, सर ये वीडियो कहाँ हाँ, मिलेगा सर? ये मैं आपको ना डाउनलोडेबल वीडियो तो मैं मेल करा दूंगा, तो आप डाउनलोड करके उसको रख सकते हो। मैं जैसे आपको एक क्वेश्चन में ट्रैप किया ना अभी, एक्सपीरियंस्ड फ्रेशर, लास्ट। हाँ ऐसे ही यस सर। सबको कुछ ना कुछ क्वेश्चन में मैंने ट्रैप किया हुआ है, और ये ट्रैप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बाकी लोगों के इंटरव्यू जरूर देख करके जाना। तो सर उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? एग्जैक्ट आंसर कुछ नहीं होता ट्रैप क्वेश्चन का, सिर्फ ये यस सर। देखने को मिलता है कि आप अपने पॉइंट से डिविएट तो नहीं हो रहे हो, आप समझ रहे हो। तो थोड़ा सा आप एकदम डिविएट हो गए, पहले आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे कि मैं बताऊंगा कि मेरे अंदर एक्सपीरियंस है, मेरे अंदर नॉलेज है, फिर एकदम से आप पलटी मार गए कि मैं फ्रेशर को मौका दे दूंगा। तो ये पलटी नहीं मारना, इफ यू आर टू यस योर सर। पॉइंट, स्टिक टू योर पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है ना। बस, ओके ऐसा सर। एग्जैक्ट आंसर कुछ नहीं होता, ठीक है। ओके सर, हाँ, आपसे बात चलो, करके काफी बेहतर लगा। बिल्कुल आराम से निकलेगा इंटरव्यू, आप लिख के ले लो। ऑल द बेस्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। सो गाइज दिस वाज द एंड ऑफ मॉक इंटरव्यू। मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। यदि आप भी अपना मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रही है, मॉक इंटरव्यू बाय यशजन सर। जाकर के अपना मॉक इंटरव्यू जरूर से शेड्यूल कराएं, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया और क्या क्या आपके अंदर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।